बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम दुनिया में जहाँ भी रहे एक चीज़ हमें जो कनेक्ट करती है वो है क्रिकेट। पाकिस्तान की अवाम, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के चाहने वाले रहते हैं। कनाडा में G20 मुनक्किद होने जा रहा है और बहुत से बड़े चेहरे आकर कनेडियन लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे। बहुत सी फ्रेंचाइज कनाडा आ रही हैं और आपके लिए इंटरटेनमेंट के साथ क्रिकेट का कंपटीशन भी लेकर आ रही हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपकी आवाज़ सलमान अरशद। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं, क्रिकेट की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। एक नई फ्रेंचाइज जो G20 में आ रही हैं, उनके ओनर हमारे साथ होंगे, उनके CEO हमारे साथ होंगे, उनके कोच हमारे साथ होंगे जो टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, ODI खेले हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ कनेडियन क्रिकेट के 2 सितारे भी स्टूडियो में मौजूद होंगे। सबसे आपकी बात करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाता हूं रंजीत बागवे, जो CEO हैं सरी जैगवर्स के, और हरजिंदर सिंह धानी जो ओनर हैं सरी जैगवर्स के। इस सेगमेंट में उन दोनों से बात करेंगे और फिर हम कोच की तरफ जाएंगे। कैसे हैं आप रंजीत? I'm good, Salman bhai. How are you? Welcome to the show. Harjinder, how are you? Very good, Salman bhai. How are you doing? Good. Very nice to have you. Guys, before I go further in the show, I want you guys to let us know how you connect to the cricket. Why do you love cricket so much to bring it to Canada? So basically, being from India, I was born in India, Mumbai. So Mumbai mein cricket is like anything. I mean, you have cricket right from this big stadiums right up till playing in gullies. So that's where I connect with cricket. I mean, we've seen cricket all our life. I've played a little bit of cricket, but not professionally. Yeah, that's my connection to cricket. I've always seen it, felt it, always been with cricket right from childhood. ज़बरदस्त। मैं रंजीत भाई से भी सवाल करना चाहूँगा। रंजीत भाई, जी कनाडा में क्या जो सरी जैगवर्स है उसके बारे में व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे आप? क्योंकि कनाडा आप आ रहे हैं, G20 खेलने वाले हैं, एक बड़ी फ्रेंचाइज का नाम और एक बड़े शहर का नाम लेकर आप आ रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को आप सरी जैगवर्स के बारे में? So I'd like to connect to our viewers and say that this is our first season. We would want your support. We would want you guys to turn up in large numbers and support us, and to make sure that we as a team bring the trophy back to Surrey and entertain the people, the viewers across the globe, in Canada, across the globe, and make sure that this is a memorable tournament for us. And moving forward, we ensure that we have certain plans in place. Those are the plans that we've come in with as a franchise, and through the course of time, we'll connect with you guys and explain our plans to you and ensure that it all falls in place. Very nice to hear that. Ranjit, that there is a follow-up question with that. Canadian supporter से आपकी expectations क्या हैं? मतलब आप क्या expect कर रहे हैं Canadian supporter से कि वो आपको आके कैसे support करें? Grounds में, ground के बाहर, what are your expectations from the Canadians? So first things first, we'd love them. We'd love to have them at the stadium, support us in large numbers, support our players. We are here to play for you all and to ensure that we bring the cup home. So yes, I mean, in principle, we'd like them to come and play, watch us play, and at the same time, if for those who can't, we request you all watch us through the channels. There are local channels where G20 is going to be aired live. So root for us, support us in every possible way that you can. Definitely. I'm pretty sure people will be supporting you guys. People will be rooting you guys. Let me involve Harjinder in the discussion. Harjinder, as an owner, expectations होती हैं. You want your team to achieve certain goals. What is the ultimate goal of your first season in G20? Sir, to be very honest to you, this is, as you know, it's our first season in GT20. हमने बड़ा simple सा concept रखा है. We are not complicating things too much.
The only two areas we are primarily focusing on, one of which is, like Ranjit said, we want the locals to support us, the cricketing community in Canada and the wider community in Canada. We want them to feel a part, of Surrey Jaguars family. We want them to come out in big numbers, support us throughout the tournament, right from the start till the end. And this is what will take us, to the second goal, will help us in the second goal, which is, God willingly winning the tournament. और वो तभी होगा जब हमें लोकल सपोर्ट करेंगे, राइट? जब हमें लोकल्स की सपोर्ट आएगी, कैनेडियन लोकल्स की सपोर्ट आएगी, क्रिकेटिंग कम्युनिटी से, वाइडर कम्युनिटी से, विद देयर सपोर्ट we are going to achieve our second goal, which is winning the tournament. And God willingly will put everything into it. We'll give our best shot, and all we need is a good support from locals to help us win the tournament. बिल्कुल सही। पर हरजिंदर, आपको नहीं लगता कि पहला सीजन कमिंग इन आपको बहुत से अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और टूर्नामेंट जीतना, अदर टीम्स आर प्रीटी कंपैरेटिव एज वेल इफ वी लुक एट द रोस्टर? You're absolutely right, sir. But you have to aim somewhere, right? I mean, we can't go into a tournament thinking कि हम third आएंगे या fourth आएंगे, या bottom आएंगे. So the idea is to, aim for the top, and बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है. God willingly, will put our effort in, and the support we need from the locals, if that comes in, I'm pretty sure कि, we'll bring the trophy home. Okay, रंजीत, मेरे साथ स्टूडियो में कुछ कनेडियन क्रिकेटर्स मौजूद हैं। आपने लोकल क्रिकेट को इन्वॉल्व करने की बात की। टीम का नाम सरे है, कनाडा का वो शहर जहां पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की जा सकती है। तो इस नाम के साथ जब आप एक शहर का नाम किसी फ्रेंचाइज के साथ जोड़ते हैं तो डेफिनेटली वहां पे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। तो व्हाट डू यू हैव इन माइंड फॉर द पीपल स्पेसिफिकली इन सरी, कि वहां पे क्रिकेट को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा और ये फ्रेंचाइज कैसे सरी में क्रिकेट की हेल्प कर सकती है? जी, so like I said, Salman, we've come in with a definite plan. Our objective moving forward would be to create a platform, to give a platform to the local Canadian cricketers, and ensure that the world of franchise cricket opens up to them. Now that could be via local engagement, that could be via academy setups moving forward, where we help develop cricketers to take their skill set to another level, which will then open the opportunities for them, to get into franchise cricket across the globe. Right. So that leads me to my next question, and that is interest in Canadian cricket. Of course, you've answered that. लेकिन मुझे ये बताएं कि आप इंडिया से हैं, वहाँ पे भी बहुत क्रिकेट खेली जाती है, पूरी दुनिया में और बहुत लीग्स खेली जा रही हैं। GT20 में आपका एंटर होना और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ, एक्सपेक्टेशंस तो एक जगह पे, लेकिन हाउ आर यू फीलिंग? एक्साइटमेंट लेवल क्या है? प्लेयर्स के बारे में क्या ख्यालात है? इंटरेक्शन कैसी है? तैयारी कैसी जा रही है अभी तक? Oh, we're feeling great. We're really excited. We're looking forward to this season. If you have a look at our squad, we've got, we're one of the few teams who've got a very balanced squad. If you look at our squad composition, we've got the likes amongst the internationals. We've got the likes of Alex Hales. We've got Iftikhar Ahmed from Pakistan. We've got Mohammad Haris from Pakistan. We've got Lalchand from Bangladesh. So Ben Cutting from Australia. So these are professionals who are renowned across the globe for T20 cricket. Even among. I must tell you, I'm a cricket fan, and Alex Hale is one of my favorite. So I'm pretty sure with me, many Canadians are looking forward to see Surrey on the ground, Jaguars on the ground. Let me just ask you one question about local cricketers. Expectations from cricketers involved from Canada. So if you look at the cricketing community in Canada, majority of them are immigrants. Now when I say they are immigrants, they are people who've immigrated to Canada, or maybe they are the second generation cricketers there, where the level of skill set is really high. Some of the cricketers that I've seen, I firmly believe, and having seen this from 2019, where I was a part of the tournament, I firmly believe that if given the right opportunities, I'm fairly confident they would be playing franchise cricket across the globe. The likes of IPL, the likes of CPL, Big Bash. I believe that the talent is there. They are immensely talented. We've got two local cricketers amongst the Canadians.
one local cricketer, sorry, Pargat Singh, who is one of the most prominent cricketers in the Canadian circles there. बिल्कुल. Some of these cricketers I had opportunity to see live. और मैं उनके बारे में भी बात करूंगा. हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ क्रिकेटर्स हैं, मैं बार बार उनके बारे में मेंशन कर रहा हूँ. हरजिंदर, अल्टीमेट गोल इज टू विन द टूर्नामेंट. अगर पहला टूर्नामेंट आप लोग जीत जाते हैं, what would be that feeling? आपकी एक्सपेक्टेशन अगर मैच होती है तो उसके बाद फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे सरी के लिए, जैगवर्स के लिए? Sir, future plans are already in place. Winning the tournament is going to be a icing on the cake. If I be very honest to you, we've already got a plan in place for at least the coming 3 years, where, like Ranjit has mentioned, we've got plans to develop the grassroots crickets in Canada, which is what we are, eagerly focusing on. क्योंकि grassroots से ही, एक academy से ही players develop होंगे, and the ideal goal is to, at the moment, I think Surrey se Pargat is the one who is, playing in the Canadian national team. The goal is to have 3, 4, 5 players coming out of Surrey and playing for the national Canadian team. So that's what the goal is in the longer run. And that's what we want to focus and develop in Surrey and wherever we can on a wider scale in Canada. Perfect. And also Salman, sorry if I may add here, if I may come in here. Also, apart from Pargat, if you look at the other members of our squad, the Canadian members of our squad, we've got the likes of Dylan, we've got the likes of Amar, there's Sunny, there is Shield, there's Kerav. These are fantastic cricketers. They're great cricketers, they're upcoming cricketers. We've got 2 under-19 cricketers who are immensely talented, and we as a franchise are really, really looking forward to seeing them on the field. तो 2 स्पिनर पिक किया आपने रंजीत, जो अंडर 19 है, कैनेडियन स्पिनर्स. तो इसका मतलब है आपका फोकस वहां पे था. तो यू हैव डन योर होमवर्क. नोइंग कैनेडियन क्रिकेट, स्पिनर्स आर वेरी बिग हियर. कैनेडियन क्रिकेट में बहुत यूजफुल होते हैं. तो अंडर 19 स्पिनर्स को आपने पिक किया है. तो आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव अ प्लान. आप वो डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या यू वांट टू कीप इट फॉर द गेम एंड शो इट टू द अदर टीम, शो योर कार्ड? Yeah, I think we'll leave it for the field. But what I can tell you is spinners, as we all know, as cricketers, we all know that they play a very important role in T20 cricket. Wherever it's played, whatever conditions it's played, it's a proven fact that spinners play a very crucial role in T20 cricket. Yep. Guys, it was pleasure to have you on the show, and hopefully we can conduct more shows with the performance of the team. Inshallah, in coming days we will talk more about it. मैं आप दोनों से थोड़ा सा light questions करना चाहता हूँ और थोड़ा सा let me put you on spot. So Harjinder, I am going to ask you few questions. You have to take one name. It's rapid fire format. Pick a batsman between 2, Sachin Tendulkar or Virender Sehwag. Tendulkar. Ranjit, I am going to ask you a little more complicated question. Bumrah या Pandya? Bumrah. Okay. Harjinder, I'm coming back to you. Babar या Steve? Steve Smith. Babar. Harjinder, Ranjit, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ. विराट कोहली या रिकी पॉन्टिंग? विराट कोहली. Okay. I guess I'll leave you here and अगर सिलेक्शन की दोबारा बात हुई तो आप लोग सोच सकते हैं 90s में आपको सिलेक्शन करनी पड़ती तो आपके ऑप्शंस बहुत सख्त होते. दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे. हम अगले सेगमेंट में जाएंगे. हमारे साथ सरी जैगुआर्स के कोच होंगे जो खुद इंडियन क्रिकेट का हिस्सा रह चुके हैं, टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, ओडीआई खेल चुके हैं, और जो मुझे फीडबैक मिला है, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल कोच टू एंड वेरी फ्रेंडली विद द गाइज प्लेइंग फॉर हिम. सो विल टॉक टू हिम एज वेल. थैंक यू सो मच. एनी लास्ट मैसेज you guys want to give to the viewers? Let's start with Harjinder and then we'll go to Ranjit. Harjinder, what is the message you want to give to the viewers? One message is feel a part of Surrey Jaguars. That goes out to every local in Canada, and let's row together. Very well said. Ranjit? Come and watch the game with us and let's roll. Let's roll, guys. ये थे हमारे साथ रंजीत बागवे और हरजिंदर सिंह धवानी, जो ओनर थे और सीईओ थे सरी जैगुआर्स के. इसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. हम कोच से बात करेंगे और हमारे साथ जो कैनेडियन क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, फ्यूरियस फास्ट बॉलर्स, और यकीन करेंगे जब मैं ये कह रहा हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस दैट दी बेस्ट फास्ट बॉलर्स आर विद अस इन द स्टूडियो इन कैनेडा एंड वी विल टॉक टू देम. फिलहाल चलते हैं एक ब्रेक की तरफ. मिलते हैं कुछ देर बाद. Hi everyone,
this is Liton Das. I am really excited to be a part of Surrey Jaguars team. I hope you guys come and support our team in this global T20 Canada, starting from 20 July. See you then. Hey guys, Ben Cutting here. Very excited to get back to Canada this year for the GT20 Season 3 and can't wait to join the Surrey Jaguars. So get your tickets, get on board and we'll see you there. Hey everyone, my name is Amar Khalid and I'm thrilled to be a part of GT20 Canada Season 3 representing the Surrey Jaguars. I'm looking forward to learning from some of the game's best T20 players like Alex Hales, Ben Cutting, Nathan Coulter-Nile, among so many others. The action begins July 20th. I hope to see everybody out there. वेलकम बैक नाजरीन आज की महफिल में हम ख़ास तौर पर क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। अब जो मेरे साथ मेहमान ऑनलाइन मौजूद हैं उनका तारुफ करवाते हुए शायद मुझे आधा घंटा लग जाए। बहुत से और तारुफ हैं। आज ये सरी जैगुआर के कोच के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं टीम इंडिया के लिए, ODIs भी खेल चुके हैं और एक हाईलाइट इनके कोचिंग कैरियर की ये है कि 2007 का वर्ल्ड कप जो MS धोनी ने पहला वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन इंडिया के लिए जीता था, ये टीम इंडिया के कोच थे। तो जहां पे मैं इनसे सरी जैगुआर्स के बारे में बात करूंगा, वहां पे उस मैच के बारे में मेरे ज़ाती सवाल भी हैं, वो भी मैं इनको तंग करूंगा उन सवालात से। और जिम्बाब्वे की नेशनल टीम को भी ये कोच कर चुके हैं। हाय कोच मिस्टर लालचंद, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आप सरी जैगुआर को कोच कर रहे हैं। सबसे पहले मैं GT20 के बारे में और आपकी टीम के बारे में ये सवाल करना चाहता हूं कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? आप एक GT20 का एक जो चैंपियनशिप है वो पहले एज अ कोच भी टाइटल जीत चुके हैं, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखो, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हम अच्छा करें और जीते। देखो, कोई भी टीम जब या फ्रेंचाइजी लेते हैं और मैं भी जब कोई टीम को कोचिंग करना चाहता हूं और लेता हूं तो ये एक्सपेक्टेशन लेता हूं कि मेरी टीम जीते और अच्छा करे टूर्नामेंट में, क्योंकि एक रेपुटेशन है। मैंने लास्ट ईयर भी G20 में कोच था विनिपेग हॉक से और हम लोग टूर्नामेंट जीते थे। उसके बाद टूर्नामेंट हुई नहीं, तो गैप ऑफ 3 years नाउ वी आर कमिंग बैक। सो एक्सपेक्टेशन इज दैट वी हैव टू डू वेल एंड मेक श्योर दैट वी विन अगेन। बिल्कुल सही है सर। आपने अभी गैप का जिक्र किया, गैप के बाद दोबारा वापस आना, टीम कॉम्बिनेशन जो है इस तरह के टूर्नामेंट में, छोटे फॉर्मेट है, बड़ी क्विक गेम्स होंगी, तो क्या how satisfied are you with the team combinations or team selection of Surrey Jaguars as a coach? See, I think we have got a very good team, to be very honest. Yes, there were 1 or 2 fallout because of some reason, but we have got the replacement and looking at the team combination मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारी जो बैटिंग है काफी अच्छी है और स्ट्रांग है, मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग है, हमारे पास ऑलराउंडर्स अच्छे हैं और मेन थिंग है जो कि एसोसिएट के हमारे 3 अच्छे प्लेयर्स है, जैसे कि लमीचंद एक अच्छा लेग स्पिनर है, अयान खान है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में काफी अच्छा किया, जतिंदर सिंह एक अच्छा बैट्समैन है और जो मेन प्लेयर्स होंगे मुझे लगता है कि वो कनाडा के प्लेयर, बिकॉज ये कनाडा T20 और इनके प्लेयर को एक्सपोजर देना है और मेन थिंग इस प्लेयर के ऊपर ज्यादा फोकस रहेंगे मेरा, क्योंकि मुझे कनाडा के प्लेयर्स को अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है ताकि वो कनाडा के लिए खेले, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करे और मेन थिंग है कि हमारी टीम की भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो। तो फोकस तो यही है कि हमारी टीम अच्छी करे और देखो जब टूर्नामेंट होता है तो लोग बातें करें, यार यस सरे जैगर्स की टीम अच्छी थी, यही हम चाहते हैं क्योंकि लोग बातें करें हमारी टीम के बारे में। बिल्कुल सही सर। आपने ओवरसीज प्लेयर्स का जो है उनका जिक्र किया, कनाडा से भी प्रगत हैं, सनी हैं, अम्मार हैं, डिलन हैं और फिर 2 जूनियर्स जो स्पिनर्स हैं। और कनाडा की एनवायरनमेंट में जितना मुझे क्रिकेट का पता है कि यहाँ पे स्पिनर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनमें से अगर एज अ व्यूअर, एज अ फैन मैं आपसे पूछूं कि आप किसको देख रहे हैं कि जिससे आप हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स को डेफिनेटली हम देखना चाहते हैं कि 2 यंगस्टर्स हमारे पास है अंडर 19 के, उनको उनमें से डेफिनेटली हम एक को ट्राई करेंगे
रोटेट करेंगे, दोनों को अपॉर्चुनिटी देने की। तो देखिए ये बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ रब शोल्डर करेंगे, ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उनके जो नॉलेज है उनसे लेंगे और होपफुली दे विल that knowledge if they take and then they perform on the park. That is the main thing because हर एक कंट्री का प्रीमियर लीग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके कंट्री के प्लेयर्स को ज्यादा एक्सपोजर मिले, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेले और उनके कंट्री को बाद में हेल्प हो। तो इसी तरह ये ग्लोबल T20 जो कनाडा की है, यही हम चाहते हैं कि कनाडा के प्लेयर को अच्छा एक्सपोजर मिले, उनको अच्छा परफॉर्मेंस करने मिले और वो प्लेयर जाके फिर कनाडा जो नेशनल टीम है उनके लिए अच्छा करे, ताकि वो भी जैसे कि अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर से वहां पे आना चाहिए और आगे चल के डेफिनेटली कनाडा की टीम वर्ल्ड कप में खेले। यही सब लोग चाहते हैं। सर, बहुत छोटे लेवल से जब एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उसको कहा जाता है कि जितनी अच्छी क्रिकेट खेलोगे उतना इंप्रूव करोगे। आई थिंक GT20 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कनेडियन प्लेयर्स के लिए, कनेडियन क्रिकेटर्स के लिए। तो बहुत से बड़े नाम आपकी टीम के साथ जुड़ रहे हैं। एलेक्स हेल है, इफ्तिखार है, लिटन है, बेन कटिंग है और शायद मैं और बहुत से नाम भूल भी रहा हूँ। तो आप एज लीडर, जो चेंज रूम में लीडर होता है, वो जो लोग जिससे सीख सकते हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सीनियर प्लेयर्स से कि वो जूनियर्स को या नए लड़कों को क्या सिखाएंगे? एक कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी टीम सभी सीनियर प्लेयर से नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि लीग्स होते हैं इसमें काफी सीनियर प्लेयर होते हैं और काफी जूनियर प्लेयर होते हैं। जैसे कि आपने नाम लिया एलेक्स, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है इंग्लैंड के लिए और T20 में उनका नाम है। लिटन दास अब बांग्लादेश के लिए काफी अच्छा खेल रहा है और कप्तानी भी की है। इफ्तिकार है जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। देन वी हैव गॉट बेन कटिंग जो कि अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। देन मोहम्मद वासिम है जूनियर, वो एक अच्छा डेथ बॉलर है। देन मोहम्मद वासिम है जो हमारे पास ऐसे काफी प्लेयर्स लोग हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन किया अपने अपने देशों के लिए। तो जब ये प्लेयर खेलते हैं कनाडा लीग में और जब हमारे कनाडियन प्लेयर्स खेलेंगे इनके साथ, तो डेफिनेटली काफी सीखने मिलेगा कि कैसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं, कैसे अब पिचेस में लोग एडजस्ट करते हैं, कब आपको बॉलर्स को टेक ऑन करना है, कब आपको अच्छे से खेलना है, विकेट को कैसे रीड करना है, तो गेम का सिचुएशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको बैटिंग करनी है। ये काफी चीजें सीखने मिलती है। तो मुझे लगता है कि यस, ये जो टूर्नामेंट है ये प्लेयर लोगों को काफी अच्छा एक्सपोजर देगा और काफी प्लेयर लोग सीखेंगे और डेफिनेटली उनका भी क्रिकेट काफी ऊपर जाएगा। ठीक है सर, हम कंपटीशन और एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। आप सीजन्स कोच कर चुके हैं, आप कनाडा में GT20 का एक कंपटीशन पहले देख चुके हैं। सरी जैगुआर्स एक नई टीम है, तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहेगा कि नई फ्रेंचाइज है, कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस कंपटीशन जो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक है, कितना टफ कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी देखो, जब आप इंटरनेशनल लीग में खेलते हो तो कंपटीशन होगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली टफ कंपटीशन होगा। तो इसीलिए हमको मेंटली प्रिपेयर भी करना पड़ेगा प्लेयर्स लोगों के लिए। जब जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बिकॉज दे नो, बट हमको एसोसिएट और अपने कैनेडियन प्लेयर्स को प्रिपेयर करना है कि ये कंपटीशन काफी टफ होगा। तो इस टफ कंपटीशन में आपको मेंटली टफ भी होगा, टफ होना चाहिए। अगर आप स्ट्रांग होगे तो आप डेफिनेटली अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो उसके लिए एज अ कोच आई हैव टू गिव देम दैट कॉन्फिडेंस। ठीक जी, देखो प्लेयर लोग ऐसे भी प्रेशर में होते हैं, उनके फैमिली प्रेशर होता है, मीडिया प्रेशर होता है, उनके कोचेस के प्रेशर होते हैं। अगर एज अ हेड कोच अगर मैं भी प्रेशर दूं तो फिर उनके परफॉर्मेंस के ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। इसलिए मेरा काम है उनको प्रेशर नहीं देना है और उनसे मुझे बेस्ट निकाल के लेना है। और एंड आई थिंक दैट इज द मेन रीजन ऑफ अ कोच कि आप कैसे उन लोगों को मैनेजमेंट करते हैं, सीनियर्स वर्सेस जूनियर्स, एंड प्लस how you motivate them to perform better, and that is the key for any team, any player to get the best out of it. कोच, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है वो ये कि जो लोग कनाडा में नई फ्रेंचाइज को आता हुआ देख रहे हैं, सरी इज अ न्यू फ्रेंचाइज, वो फैन बेस ढूंढना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी एक टीम को पूरी तरह से फॉलो करें, आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? एक ही मैसेज देंगे, देखो वहां पे सरे की एक जगह भी है तो उनके तो लोग डेफिनेटली सपोर्ट करें, लेकिन जब टीम अच्छा करती है तो ऑटोमेटिकली फैन बेस सपोर्ट हो जाता है। तो हम यही करेंगे, हम यही कोशिश करेंगे हम शुरुआत अच्छी करें और उनके शुरुआत के पहले हम डेफिनेटली फैन को
तक पहुंचे कि हमारी टीम को सपोर्ट करे। क्यों? ABC की हमारे पास ये प्लेयर है और हम अच्छा क्रिकेट आपको देंगे, तो ताकि आप हमारे साथ जुड़ो और हमारी टीम को सपोर्ट करो, ताकि जब लोगों का सपोर्ट होता है तो टीम और भी अच्छा करती है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। हमने GT20 के बारे में बात की। मुझे शायद कभी मौका मिले आपको दोबारा इंटरव्यू करने का या नहीं, तो एक सवाल जो मेरे दिल में है एज अ क्रिकेट फैन, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। सर, MS धोनी 2007 के वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर जब उन्होंने एक बॉलर को दिया, तो चेंज रूम में और आपके जज्बात क्या थे? क्या आप पूरी तरह से सपोर्टिव थे उस फैसले के? और मतलब उस वक्त तो एक वर्ल्ड कप का फाइनल है, और आपका क्या उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? देखिए, हम लोग सरप्राइज नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप देखना उसको ऑस्ट्रेलिया के मैच में उनको हम लोगों ने और एक टाइम उसको बॉलिंग दी थी। दो चीजें थी इसमें, हमने काफी उसके ऊपर चर्चा की थी कि फाइनल में सपोज ऐसा लास्ट ओवर किसी को अगर डालना पड़े तो कौन ऑप्शन होगा। तो धोनी ने, हम लोग सबने डिसाइड किया था, और धोनी ने बोला कि सर मैंने जोगिंदर को देखा हूं हमारे लोकल क्रिकेट में, जैसे रणजी ट्रॉफी होती है ना, उसमें उसने देखा है कि ये सर अच्छा डेथ ओवर डालता है। और उसके बारे में हम चर्चा की और दो चीजें उसने कहा। एक तो जोगिंदर सिंह इज अननोन एंटिटी, इससे कभी ज्यादा दूसरी टीम ज्यादा होमवर्क नहीं कर सकती, ठीक है, होमवर्क नहीं कर, तो नोबडी नोज को क्या करते हैं। और दूसरी बात है, जोगिंदर का आप अगर फेस देखो तो इतना, मतलब उसका फेस का स्टील जैसा फेस है, नो एक्सप्रेशन। और नो एक्सप्रेशन मतलब वो कभी प्रेशर लेता नहीं है। तो वो एक और एक चीज था कि हमें उनके फेवर में देना, और जब ऐसा मौका आया तो धोनी ने डेफिनेटली उसको दिया। तो इट वाज नॉट अ सरप्राइज टू अस बट सरप्राइज टू मिलियंस ऑफ पीपल। सही। लालचंद सर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ MS धोनी, तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा, हम तो सिर्फ फैन हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने की, उनको कोच करने की। Do you see a leader who's as good as MS Dhoni in near future in cricket? I think you can't compare, because देखो हर एक लीडर अलग अलग होते हैं। पहले जैसे कि गांगुली थे, वो भी काफी अच्छे लीडर थे, टीम को काफी नए मुकाम तक पहुंचाए। MS धोनी तो एक अलग ही लीडर था कि जो कि प्लेयर्स को अच्छा बैक करता था। हम लोग सब कहते हैं कैप्टन को कभी एक्सप्रेशन बता नहीं रहा था ग्राउंड पे। और मेन थिंग है कि ही न्यू हाउ टू गेट द और बेस्ट फ्रॉम द ईच प्लेयर, सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ लीड। बट अभी ऐसे कोई दिख नहीं रहा है मुझे लगता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नेवर नो, समबडी माइट कम अप। बिकॉज देखो क्रिकेट में लेजेंड्स आते हैं, गावस्कर आए, फिर तेंदुलकर आया, फिर विराट कोहली अभी आए, जैसे MS धोनी दूसरा। तो मे बी इन द इयर्स टू कम, बट एट द मोमेंट वी डोंट सी एनी धोनी कम अभी है अब तक। थैंक यू लालचंद सर। मैं सिर्फ आखिर में आपसे थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा, क्रिकेटर्स के नाम लूंगा, यू हैव टू पिक वन। मैं टेस्ट क्रिकेट के हवाले से ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, फ्लिंटॉफ या बेन स्टोक्स, हु वुड यू पिक? बेन स्टोक्स। सर, उसके अलावा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ टेस्ट क्रिकेट के हवाले से ही, ब्रायन लारा और रिकी पॉन्टिंग? ब्रायन लारा। सर, चंद्र पॉल या जावेद मियांदाद? जावेद मियांदाद। सर, आखिरी क्वेश्चन और बड़ा क्रूशल और बड़ा, ये क्वेश्चन बहुत अनफेयर है, मुझे पूछना भी नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछूंगा सर, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? सभी लोग यही क्वेश्चन पूछना चाहते थे, मुझे पता था। बट देयर इज नो कंपैरिजन फिर सचिन तेंदुलकर। सर, लास्ट क्वेश्चन मैं फिर से एक और पूछूंगा, वो है इंजमामुल हक या बाबर आजम? इंजमामुल हक वाज अ वेरी बिग प्लेयर, बिकॉज बाबर आजम नहीं है, लेकिन ही इज एज क्लोज टू इट, बिकॉज अभी भी बाबर आजम का काफी क्रिकेट बचा है। तो व्हेन ही रिटायर्स देन विल कम टू नो कि वो कितने मुकाम तक पहुंचे, लेकिन एट द मोमेंट डेफिनेटली इंजमामुल हक। ठीक है सर। सर, अभी आप हैं तो मेरा दिल कर आपसे क्वेश्चन करता जाऊं। आखिरी क्वेश्चन आपसे एक और पूछ लेता हूं सर, वकार या वसीम? दोनों भी ब्रिलियंट, बट आई वुड गो फॉर वसीम। Thank you so much, sir. Thank you for taking the time out to talk to us, and good luck for Surrey Jaguars in this season. We're really looking forward to have you here, and hopefully you guys will win. Thank you very much. बस आपकी दुआएं हमारे साथ रहे। Thank you, sir. नाज़रीन, ये था दूसरा सेगमेंट। अगले सेगमेंट में हम कनेडियन लोकल प्लेयर्स के साथ बात करेंगे, उनके कैरियर के बारे में बात करेंगे, और उनकी जो जालिमाना आउट स्विंग और इन स्विंग और बाउंसर्स हैं उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं कुछ देर बाद। Hi, I'm Shil Patel, left-arm off-spinner, and I can't wait to play for Surrey Jaguars this year in the GT20. I'm beyond excited to take the field on July 20th with some of our favorite international players like Alex Hales,
and I can't wait to see you all there. Hi guys, this is Sunny Vatharu, Canadian national player from Winnipeg. I'm very excited to be part of GT20 Season 3 and even more excited to play for Surrey Jaguars this year. Looking forward to play with international players such as Alex Hales, Iftikhar Ahmed and Lithan Das. Can't wait to share the field on 20th July. Come support us, Surrey Jaguars. Hi everyone, Alex Hales here. Really excited to be part of the Global T20 League this year. Can't wait to go over to Canada, my first time there. So really excited to be joining up with the Surrey Jaguars. So see you all soon. Let's roar. वेलकम बैक नाजरीन शो के तीसरे सेगमेंट में मेरे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं। दोनों क्रिकेटर्स कनाडा के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, दोनों फास्ट बॉलर हैं और बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं। I'll introduce you first to Dylan Halliger, right arm fast bowler. He's born in Guyana और he's playing in Canada right now. बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और यकीन करें कि जो बैट्समैन कनाडा में हैं they probably know him and fear him. और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अम्मार खालिद, पाकिस्तान में पैदा हुए, अब यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत स्पीड के साथ आउट स्विंग बॉलिंग करते हैं। If I'm not wrong, we'll ask more Ammar about it. Let's go to Halliger. How are you, Dylan? I'm good, very excited, having a lot of cricket coming up soon, and just came off of having the ODI status, that was a very big achievement for us. Knowing that Canada used to play ODI for 12 years ago, and putting in all the work and having ODI status now, really looking forward to play international cricket soon. Most of the guys, we put in a lot of hard work, but our main focus now is GT20 happening in a few weeks, so I'm very excited. Ammar, आप कैसे हैं? All good, thank you for asking and salam to everybody. अम्मार, कैसा लग रहा है GT20 के बारे में, एक्साइटमेंट लेवल क्या है? It's amazing. Excitement levels बहुत high हैं because GT20 is coming back after a while. And what it brings, not just for the fans but us local cricketers, is amazing opportunity to interact with global superstars, coaches that have immense pedigree. So from a learning perspective, from a playing perspective, it's amazing, and what it's going to do for the infrastructure in Canada. So couldn't be more excited. Both of you have been part of Canadian squad recently, and as Dylan just mentioned, first of all, congratulations to making back to the ODI status with the Canadian team. And I remember watching Canadian team play in the World Cup, and we really hope that we see you guys again performing and doing well for Canada. That being said, let me come to the subject of the day, GT20, Surrey Jaguars. Both of you will be playing Canadian fast bowlers. Before I ask you anything else, it's not easy to be a fast bowler in Canada, is it? Dylan? To be honest, no. As we say, it's not easy. First of all, Canada is a country with different climate and conditions, so that makes an impact on like the wickets and stuff. But as you said, it's not good being a fast bowler in Canada. But we work with whatever we have, and it's a challenge. But it is what it is. Ammar, you're a fast bowler too. How do you feel about fast bowling? Let me just add that here. नाज़रीन, टोरंटो में जो सबसे बड़ी लीग है, सबसे स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव लीग है 50 ओवर की, T&D, और उसकी सबसे हाईएस्ट डिवीजन में ये दोनों खेलते हैं। वहाँ पे, if I'm not wrong, Ammar, fast bowlers don't bowl more than 15 overs total in total 50 over game. It's very common to see those. Yes, absolutely. Why is that? Why do you want to tell the people why is that? In the past, I think what we've seen in the past is the kind of wickets we've gotten. So they're very conducive to spin. So you see, that's why we have a lot of spin bowlers, and the job for the fast bowlers is to come in, rough the ball up in the first few overs, and then it's break time for us for the next 40 overs. But do you see it changing soon, guys? Amazing. So since I think Coach Pubudu took over last season, immediately we saw a difference in the type of wickets we were getting, because when we played on the international level, they're not spin-friendly tracks. They're good, hard surfaces where ball carries through.
So even as a batsman, you need to be challenged by fast bowling. So our guys need to be able to face that. Okay. So we've seen a big difference in wickets even this season. It's been really fun bowling on the wickets we've had. But let me be honest, I have seen people get hit in the helmet by you guys. So you guys still think that's not good enough? I mean, I can't speak to the pace. I mean, you know, Dylan and guys like Jeremy and Kaleem are the real fast bowlers. As Khalid said, you know, I think coach has put and place a little more emphasis in trying to have better wickets. Because most tournaments we go, you know, there's a lot of good wickets, so we're trying to at least have something conducive to what we have outside. Okay. So we've been getting some pace recently, you know, and I think that's good for us working and going forward, like to play more international cricket. Okay, guys, let me jump into the GT20 format. You guys will be bowling when you're playing against some of the very well-known, very big batsmen, well-known batsmen throughout the world. Are you guys excited, nervous? How is the emotions? Because I was just talking to the coach, and he said, if I'm not wrong, he was trying to say that international players are coming, big names are coming, they will help, but at the end, it's on the local guys, how they perform. So what are your feelings? Let's start with Amar this time. Amar, how are you feeling about bowling to, let's take a big name, any big name? All the above emotions, so nervous, excited, huge challenge. But one thing, again, I have to thank our current system that coach has put in place is trusting the process. So, you know, before the games, we talk about plans, we go over our options, things we're going to be doing on the field, and then we go out and try our best to execute them. Whatever happens after that, it happens. But as long as we trust the process, do the best we can with the execution, the results will take care of themselves. Sometimes they might go my way, sometimes they might not. I'll live with that. So but that's one of the things I'm most looking forward to working with Lalchand sir and the other team is picking their brain and seeing how they develop game plans for the opposition, and how best we can execute them, and then the results will take care of itself. Dylan, same questions to you, but there's a pace factor which actually is very useful in tournaments like this. Yeah. So I mean, to be honest, you know, T20 is a more fast-paced. You know, you think you think a lot more, you know, and use variations and try to use more of a you know, tactics in because there's more experienced player. There's a lot of international players, you know. The T20 is not an easy game, so you know it's a lot of work going in the games, and as you say, you use a lot of strategies and stuff in each game. You know, you take game by game, and then you learn from all those international guys. I mean, for us, you know, it's a big thing. You know, I've played a few years, but I bowled against Chris Gill, you know, one of the fairest batsmen I've bowled to, you know, and bowling to him is fair, but you know, I mean. Look, cricket is one thing, but there's emotion factor. Like I am a cricket fan. I know if I am playing with or against a big name, so there's emotions which you cannot show on the field, but it's still there. How do you handle that? I mean, you know, as you say, you take it step by step, you know, and at the end of the day, you can't make your emotions overpower you, you know, and it's just taking it step by step and stick to the basic and just execute it in that moment, you know. Guys, this is a big opportunity for cricketers, all cricketers in Canada, and you guys are top of the branch, right? You're there, and you're going to be playing against them. There's personal goals as well. Where do you see, what do you want to achieve from this season, from Surrey Jaguars from this season? Amar, let's start with you, and then we'll go to Dylan. So, like, personally speaking, it's a lot of the learning. I'm very much looking forward to guys like Ben Cutting and Nathan Coulter-Nile being here, because they're superstars. They played for Australia. They've played in all the big leagues. T20 stars. So I really want to be able to pick their brains about, especially from the bowling aspect, how they approach the game, how they approach the batter, what their thinking is. If you're getting hit, what's my go-to options? Like, how do they approach the game? I really want to learn from them. And then from the coach, a lot of the pitch assessments, condition assessments, the strategizing. So that's my goal, is to learn as much as I can. Grab as much as you can. Exactly, and then see if I can take that and put it into motion. Dylan, what's your ultimate goal for this season? I mean, my ultimate goal is, I mean, just as we say,
working with coach. I know this is a new team, it's a new franchise. We have a lot of new international players. You know, I can remember this season in 2019, I got Ben Cotton. I remember I got 3 for 15 in that game, and Ben Cotton was one of my wickets. So, and now he's my fellow teammate. So I mean, it's like a zeal for me, you know. So, just trying to adapt and being understand more of the game from coach. You know, it's a new coach, and I'm really looking forward to strategies and stuff going in the games. Looking at strategies and then executing them to your best. Perfect. Dylan, I'm going to ask you this question. You know the roster already. Any specific player you're looking forward to spend time in change room with, to learn from? And you're in Surrey Jaguars? I mean, Alex Hales is, he's one of our teammates. I mean, he has been the number 1 T20 batsman. He has been a phenomenal batsman in T20 recently, and I'm really looking forward to, share some thoughts and stuff with him, and being in a dressing room with him, trying to add up, a lot of skills from him as a T20 dominator. All right, Amar, any specific player you're looking forward to spend time with in the change room? Ben Cutting, Nathan Coulter-Nile, Alex Hales, World Cup winner, man. Iftikhar Ahmed, oh geez, Litan Das, you name it. There's too many. But as a fast bowler, someone like Wasim Jr., he brings the ball in, you take the ball out. I hope if he's on the roster, if he comes, man, I can't wait to meet him as well. I'm a huge fan. All right. And then Shane Bond is there, Lance Klusner is there, Aqib Javed is coming as a coach. I mean, man, there's too many people. You seem very excited already. So extremely excited. Extremely. That's good to know. We want to see that. I'm pretty sure fans are excited, and to see that on players, that's even better. That players are excited too. So this definitely is a very big opportunity for anyone who is interested in cricket in Canada. Absolutely. That being said, I am going to dig into your little about your careers, regardless international or not. So Dylan, you talked about ODI status. There's extraordinary performances in Challenge League, 5 against Denmark. Yeah. What were you told after by the coach? What were your feeling? What were the emotions of the team? You want to share your thoughts about that? I mean, it was, my emotions was good, as I in the games, we try to stick to the basic, and getting 5 wickets in a game and coming out victorious, it's a lot of emotion, but it's good for yourself and better for the team. Right. So that was a good feelings in that game. I remember that game, playing in Denmark. It was a Challenge Cup. Yeah. Amar, you too, Saudi Arabia. That's a game which no one forget. That's extraordinary performance. Yeah. How was the feeling after that? What was the encouragement by the coach or from the change room after that? Oh, amazing. And very specifically because we played Saudi before that, and I'd gone for a few runs by the same guys. Right? They got after me, so we had. You get them. You feel good because you get them this time, yeah. And the best part was because the planning session we had, the plans we put in place for each one of those 4 guys, it worked out perfectly. So it was one of those games where everything was going my way. So yeah, unbelievable. Guys, when I was a kid, I was bowling in the net, and the coach told me that it's about body language. Look in the eyes of the batsman when you bowl a good one. How do you feel? Do you enjoy it when a batsman is a little scattered or not able to play you, especially with someone who's quick? Both of you are very quick. Do you like to scare the batsman, Dylan? Let me put it straightforward. To be honest, for me, me running in is I'm big. So me running in alone scares the batsman. It's true. So, but me running in alone, most batsmen are scared, but it's the execution in the end, And as you say, I have a bit pace and I just give it my all, Yeah, Amar. No, I would. Do you like to stare at the batsman after bowling a good ball? Anything you want to get into the head of the batsman, because that's I mean fast bowlers do that a lot, no? I think that's one of the things I have to work on. I've been told I'm too friendly, so I'd rather just applaud a good shot, or So that's not my repertoire. So guys, let me ask you this, and I'm talking about local cricket because a lot of local cricketers might be watching you right now. Right. A batsman you'd like to bowl to, both of you. So let's start with Amar. Amar, a batsman you'd like to bowl to, a batsman you bowl against. There's not one name I can say, but there's any name you can think of. Oh, I have 5 favorite batsmen that I love bowling to.
So, Okay. Navneet Dhaliwal, Okay. Srimanta Vijayaratne, Right. Nitish Kumar, Right. Rayan Pathan, Right. and Harsh Thakur. You took the five best batsmen's name I mean, out there. honestly, yeah, but there's many. I know there's more. Yeah, I'm yeah, of forgetting, course. But these guys are just special. For me, I think the best batsman. Like, I love the ball to Rayan Pathan. He's a guy fearless. T20 He's a big guy. name in Canadian cricket, Big. especially short format. Yeah, big. Huge. As Nitish Kumar, very technical, amazing batter. Srimanta, a big unit. He's good to bowl too. These guys give you Can challenge. muscle the ball anytime. They give you a lot of challenge bowling into them. Well, we'll see them, all of them in GT20, and you will be bowling to them, Yes. hopefully. That being said, guys, batsmen you don't like to bowl to. Someone who have like, okay, why am I bowling to this guy? This is annoying to bowl to him. Any name comes to mind? Yeah, you're up there. The viewers don't know when you come out there without a helmet and you're beating us all over the park. You're one of those batsmen. Dylan? There's this. I remember when I first came to Canada. Yeah. Ravindu Gunasekara. Oh, right. Ooh. I remember this guy. Yeah. He was like me running into him. I pitched the ball when it was. I think I bowled 10 over for like 90 runs. He was one of the fearless batsmen I bowled to. Yeah. Ravindu has been teammate. He's really, really good. Guys, show time is finishing. I want to keep going and keep talking about your career, keep talking about your excellent spells. But this is very important. You guys are part of a new franchise. And what is the message you want to give to people to come and support you? What is the message? How would you tell people to come and back you up? Dylan, let's start with you and we'll go to Amar. First of all, I'd like to, encourage everyone to come and support our new franchise, Surrey Jaguars. We're really looking forward for your support and, not to let you guys down, and try to be victorious in the end, and as we say, we roar, Surrey Jaguar, roar. Roar, Surrey Jaguar, roar. Amar, what do you have to say? और उर्दू में भी बात कर सकते हैं आप, उर्दू फैन से भी खास तौर पे बात कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि देखें नई फ्रेंचाइज है, बहुत सारे माशाल्लाह ज़बरदस्त सुपरस्टार्स खेलने आ रहे हैं, कोच इमेंस पेडिग्री अगेन, आप हिस्ट्री उनकी जान चुके हैं, सुन चुके हैं, तो लोकल प्लेयर्स भी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह सबसे अच्छी क्रिकेट सरी ही खेलेगी, सो प्लीज़ कम एंड सपोर्ट सरी। Inshallah. Good luck, you guys. I'm really excited to see you on the field and see your friends play on the field and perform is the best feeling you can get. And Absolutely. We're looking forward to you guys to perform and Surrey to do well. Absolutely. Thank you guys. नाज़रीन, ये थी 96th episode of मैं हूँ पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा, थोड़ा मुनफरिद था और इस शो के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्द लाइव शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं सरी जैगुआर्स के स्टार प्लेयर्स के साथ। एलेक्स हेल, इफ्तिखार, लतिन दास और बहुत से प्लेयर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जो आपकी लाइव कॉल लेके आपके साथ मुखातिब होंगे, आपसे बात करेंगे। वी विल अनाउंस द डेट एंड टाइम सून। आज के लिए इतना ही। मैं हूं पाकिस्तान, आप हैं पाकिस्तान, हम सब हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।